नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की डिक्टेशन में थोड़ा लेट हो गए, उसका कारण था सर्वर की प्रॉब्लम। सर्वर में कुछ गड़बड़ी थी, इस कारण से डिक्टेशन आज टाइम पे नहीं मिल पाई। तो देर ना करते हुए कुछ ही सेकंड्स में आज की डिक्टेशन शुरू करेंगे। आप हमको 2 मिनट का समय दें। लाइव चैट का ऑप्शन उपलब्ध है। कल कुछ लोग हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लाइव चैट में आके हमसे पूछ सकते हैं। विद इन सम सेकेंड्स आज की डिक्टेशन शुरू होगी। बहुत सारी मैगजीन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सी मैगजीन यूज करते हैं, तो बहुत सारी मैगजीन पढ़ी हैं जिसमें से मैटर हम निकाल लें, उसी में से बोलने लगते हैं। तो लगता नहीं है कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। आज की डिक्टेशन शुरू करने जा रहे हैं कुछ सेकंड्स में। चलिए, 10 seconds टू गो। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएस की वैकेंसी कब तक आएगी? बहुत जल्द आएगी। मीटिंग होने वाली है एपीएस और पीएस के लिए 2-3 हफ्ते में। उसके बाद डिसाइड होगा कब आएगी। फॉर नाउ, मतलब आज के लिए ऐसी कोई न्यूज कंफर्म नहीं है। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट। Writ petition was also filed initially by BCCI and its erstwhile assignee for striking down Section 3 of the Sports Act 2007 insofar as it relates to cricket test matches, and also striking down the notification issued by the central government notifying DD1 channel and DD channel as mandatory channels to be carried compulsorily by the cable operators. In the same writ petition, the notifications notifying the sporting events mentioned therein in respect of cricket to be of national importance were also challenged. Also challenged is the order of the Government of India by which Clause 7.9 was added to the licensee agreement of DTH services. Clause 7.9 is in the following terms. Double quote. The license shall carry or include in his DTS services the TV channels which have been notified for mandatory and compulsory carriage as per the provisions of Section 8 of the Cable Television Networks Act 1995 as amended, failing which the licensor shall be at liberty to take action as per clause 20.1 of this agreement. Double quote close. Subsequently, ESPN Software India Private Limited and Star India Private Limited had been impleaded as petitioner numbers 3 and 4 in the aforesaid writ petitions in view of media rights agreement as referred to above. The aforesaid appeal and writ petition were allowed by the division bench by holding that on an interpretation of the provisions of Section 3 of the Sports Act 2007 and Section 8 of the Cable Act 1995, the signals received by Prasar Bharati from the respondents should not be placed in the designated Doordarshan channels, which are to be compulsorily carried by the cable operators under Section 8 of the Cable Act 1995. Aggrieved, the present appeals have been filed by the Union of India, Prasar Bharati Home Cable Network Private Limited, and Sopan Foundation. We have heard learned Attorney General appearing for the Union of India and Prasar Bharati, and learned senior counsels appearing for Star India Private Limited, learned senior counsel appearing for Home Cable Network Private Limited, and
Sopan Foundation, learned senior counsel appearing for the BCCI. At the outset, it would be appropriate to refer to and whenever the relevant statutory provisions as such. Under Section 3 of the Prasar Bharati Act 1990, Prasar Bharati has been established as a corporation to discharge the functions of erstwhile Akashvani and Doordarshan. Under Section 12 of the Prasar Bharati Act, the primary duty of the corporation is to organize and conduct public broadcasting, the DRAT, and admitted, yet the same was disposed of almost after 4.5 years. We are at pains to say that the DRAT has totally forgotten the obligation cast on it under the RDB Act and also has remained quite oblivious of the salient features and the main purpose of Act. In this context, we may fruitfully refer to the objects and reasons of the Act. The relevant part of it reads within double quote, the financial sector has been one of the key drivers in India's efforts to achieve success in rapidly developing its economy. While the banking industry in India is progressively complying with international prudential norms and accounting practices, there are certain areas in which the banking and financial sector do not have a level playing field as compared to other participants in the financial markets in the world. There is no legal provision for facilitating securitization of financial assets of banks and financial institutions. Further, unlike international banks, the banks and financial institutions in India do not have power to take possession of securities and sell them. Our existing legal framework relating to commercial transaction has not kept pace with the changing commercial practices and financial sector reforms. This has resulted in slow pace of recovery of defaulting loans and mounting levels of non-performing assets of banks and financial institutions. Narsimham Committee 1 and 2, constituted by the central government for the purpose of examining banking sector reforms, have considered the need for changes. Stop. मैटर टफ था मतलब इवन फॉर मी इट वाज टफ सो 6 मिनट 7 सेकंड में बोला गया है हमको आप 2 मिनट दें हम कैलकुलेट कर लें स्पीड कितनी है और आपको बताएं 6 मिनट 7 सेकंड 7 डिवाइड बाई 60 7.11 6.11 एग्जैक्ट स्पीड है इसकी 114.56 हमसे कल किसी बच्ची ने कहा था शायद मैसेज करके सेंट्रल एक्साइज में शायद है वो उसने कहा था कि सर वहाँ पे कोर्ट मास्टर में स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा बोली गई थी तो 100 के मैटर्स था 100 का मैटर था याला जो पीए के लिए हम दे रहे थे उसमें हमने 15 वर्ड्स पर मिनट बढ़ा दी स्पीड वही फ्लक्चुएशन भी डाला कि इससे ज़्यादा ना हो वहाँ पे मैटर टफ था इसको कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो प्रैक्टिस करिएगा तभी ये हो पाएगा डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज लाइव चैट में लिखिएगा उसका आंसर देंगे और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे फिर से और ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय होम आई विल नॉट बी एबल टू गिव डिक्टेशन फॉर द नेक्स्ट 3 and 4 days. I will keep updating all of you on my posts. आपको सबको हम पोस्ट से अपने मेरे नज़र रखिएगा उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्योंकि कुछ मेडिकल कारणों से हम अगले 2 से 3 दिन तक शायद डिक्टेशन ना दे पाए तो आप मेरे पोस्ट पढ़ते रहिएगा हम उसमें आपको रोज की स्थिति बताते रहेंगे 2-3 दिन की बात है एक ऑपरेशन होना है तो उसका हम डिक्टेशन देंगे तो कोई पूछा है सर मेरे से गलतियां बहुत होती हैं पीएस की वैकेंसी कब तक आएगी गलतियां बहुत होती हैं तो
हम ये कहेंगे 10, कुछ लोगों की आदत होती है 10 चैनल्स में घूमना। आई एम नॉट सेइंग दैट डू स्टिक विद माय चैनल। किसी भी एक चैनल को पकड़ लो, एक डिक्टेशन बस लिखो। 10 डिक्टेशन को एक बार लिखने से अच्छा है एक डिक्टेशन को 10 बार लिखना। यही हम कई बार कह चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि एक डिक्टेशन को कम से कम 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, ना कि 20 डिक्टेशन को एक एक बार लिखो। तो इस पे ध्यान रखते हुए अगर आप काम करेंगे, बार बार उसको एक ही डिक्टेशन को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी गलतियां कम होने लगेंगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से हम। मेरे पोस्ट पे ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं, नमस्कार। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो डिक्टेशन को लाइक कीजिएगा, और हम ग्रुप में डिक्टेशन देने जा रहे हैं विद इन 4 मिनट। नमस्कार।